स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2S क्लासेस। आज हम क्लास +1 के लिए आगे सिलेबस कर रहे हैं। +1 में लेक्चर जो हो गए हैं वो चैप्टर 2 पर कंप्लीट हो गए थे। चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 3 trigonometric functions. In this chapter, starting of the chapter is that what is an angle, because trigonometry function depend on the angle, because sine of angle, cos of an angle in 10th class, tan of an angle is equal to ratio of the sides in the right triangle. So this angle is acute angle. So now in +1 it will be wide angle. Angle may be greater than 90 also. Okay. So what is the definition of an angle here? In trigonometry or basic definition, what is that? Definition of an angle is that a ray revolve about its original position, about its original position, revolve about the initial point, initial point is fixed for the ray. So a ray revolve about the initial point or initial position. Okay, the revolution will be measure of the revolution. The measure of the revolution about its initial point is called the angle. So what is that measure of the revolution? What is that measure of revolution? That initial position of the ray and the final position after revolution, final position of the ray, that initial position is called the initial side, and final position after revolution is called the terminal side. Okay, so measure means revolution. How can measure? That will be forward, I will tell, but you write the definition of an angle. So angle is a measure of rotation of a given ray. Measure of rotation of a given ray. Okay, about its initial point. Initial point होता है किसी भी रे में, तो अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट वो फिक्स रहना, वहीं से रिवॉल्व हो रही है। जैसे क्लॉक हैंड्स ओके, रिवॉल्व होता है क्लॉक हैंड। ओके, तो इनिशियल पॉइंट, द ओरिजिनल रे इज कॉल्ड द इनिशियल साइड एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ द रे आफ्टर रोटेशन is called the terminal side of the angle. These are the sides: original position, initial side, and final position after rotation. That is called the terminal side. So between both the sides, what is the rotation? Measure of rotation is called angle. Okay, so understand this. So here the one figure is initial side OA,
initial position, original position OA, and after revolution, rotation, one complete rotation, again that is called OB. A and B overlap. After one complete rotation of the original ray OA, final position is OB. A and B overlap to each other. Then this is complete rotation. And you know complete rotation is called the complete angle. And complete angle is called how much degree? 360 degree. This also we know. So complete angle means that one circle. What is the idea from this definition, and what is comes out from this definition? Angle in a circle, and this position in a circle, because complete at the one point rotation complete is at the measure of the rotation. Complete measure of rotation is at the circle. Understand? Measure of rotation of a given ray about its initial point. So at initial point of the ray, one complete rotation means this will come one circle, and center will be the initial point. Understand? So behind it, this is the phenomena that this circle will be there after one complete revolution here. Then here you see, if this is initial position of the ray at OA line segment, forward ray was there, and then this complete at the initial point complete circle. Now if this position anywhere, let us suppose this 1 unit radius, you know circle radius 1 unit, so this is 1 unit radius. Let this position be. Okay, this is the revolution base. This from here to here, this revolution is also, let us suppose 1 unit. Okay beta, it is also, let us suppose 1 unit. So this rotation is 1 radian. Rotation is 1 radian. I am saying radian, radii ke according. So what is the formula? That angle in radian, I am saying then 1 radian, 1 unit, 1 radian, radius 1 unit. Then it is length of arc, length of arc means AB. What is the length of arc? AB on the circumference. If 2 points A and B, then this is the length of arc. Yani this is a measure of rotation. Understand? This was the original position. This is the final position OB. Then rotation, measure of rotation is AB, but in relation to the radius. So then divide by radius. Okay, so means angle, let theta in radian, it is in radian, this is equal to length of arc L upon R. R is the radius. Then
This is called the angle. Measure of rotation, length of arc divided by radius. Okay, if 1 unit radius, then 1 unit angle, the 1 radian angle, then it is F1. If it is 2 unit, if it is 1.5 unit AB, so 1.5 upon 1, so then angle will be 1.5. So if it is 2 unit AB, length of arc if 2 unit, then angle will be 2 radian, 2 upon 1, 2 radian. So means, what is that definition? Clear this? Now from this, what is the next point? Measure of an angle in degree and radian. Okay? So this is in radian. Clear? In degree, what is in degree? Complete revolution is 360 degree. Okay? 360 degree. It means 1 upon 360. 1 upon 360th part is called the 1 degree. Okay? Because complete rotation 360 degree, it means if 1 upon 60th part of the complete rotation, 1 upon 360th part, that will be 1 degree. Okay? So 1 degree is equal to 1 upon 60th part. That will be. Now after that, I want to tell one point here. What is the relation between degree and radian? Okay? Now what is the relation between degree and radian? This is the important relation. Now in the circle, if this is radius, general formula, then this center, what is the circumference? 2 pi r. We know circumference of the circle, complete round, it is complete round. Clear? Complete round means 360 degree. This complete angle is 360 degree. 360 degree means complete circumference, and now angle is equal to length of arc. Length of arc is 2 pi r, complete circle divided by r. Complete circle, complete rotation, if this is complete rotation, if complete rotation, if complete rotation, then angle circumference 2 pi r, if r radius, divided by r, then r cancel, then equal to 2 pi. This is radian. I told 2 pi radian means we know that is 360 degree. So means 360 degree is equal to 2 pi radian. This, then this is the relation, then divide by 2, then pi radian, is equal to divide by 2, then 180 degree. So this is the relation in the
radian and degree. So 1 radian equal, so 1 radian is equal to divide by pi. Pi in multiply this pi radian, so pi will go in divide. Then 180 degree upon pi. This 1 radian value in the degree. Okay, pi value, what is pi value in the circle? What is the value of pi in circle? Approximately 22 upon 7. We know. Okay, in the circle, what is pi? Pi is the approximately 2 upon 7. What is pi? Actually, pi is taken in the circular object. In circular object, how taken? This is the history behind pi. Okay, how this pi taken out in the circle. Actually, many circle taken, circular object taken, circular ring taken, and small size, and the large circle and or large circle, we have taken many circle of the different radius. Okay, in that what we have done? We have done one thing, taken one thread and put the thread anywhere on the circle circumference, thread taken, put here, and along the circumference, turn on the circumference and come again on the initial point and mark on that thread with marker, and then taken the thread straight and measure on the scale. This thread length measure on the scale. Then what is this? This is the circumference, because around the circumference we have taken the thread from the anywhere one initial point of the thread, and then comes complete one round on the circumference by the thread, and thread mark on that with marker, and taken that thread as straight and measure on the circle, measure on scale. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट मेजर कर लिया हमने. ओके, एंड देन डायमीटर आल्सो इसका. व्हाट टेकन सेकंड पॉइंट? डायमीटर. तो डायमीटर हाउ मेजर बाय थ्रेड? टेकन वन थ्रेड हियर at any point and take straight with the circle. Take straight passing through the circle and then mark on the thread and taken thread out and measure the length on the scale. So diameter हमारे पास आ गया, circumference हमारे पास आ गई, हमने उनको डिवाइड किया, रेशो निकाला हमने. क्या किया? Circumference डिवाइड बाय डायमीटर, circumference डिवाइड बाय द डायमीटर, ये हमने फाइंड किया. ओके, दिस रेशो. ठीक है, हमने फाइंड कर लिया. फिर एक बड़ा सर्कल लिया और फिर रिपीट किया ये प्रैक्टिकल, ये एक्सपेरिमेंट हमने रिपीट किया. कैसे? वही थ्रेड लिया, एक पॉइंट पर लिखा और उसको अराउंड द सर्कमफ्रेंस, टर्न ऑन द सर्कमफ्रेंस एंड पिक अप द थ्रेड with mark and taken on the scale, taken the length of the thread, that will be circumference, and then again diameter of the same that taken, I told you. So like this we have taken one circle C1D1, other circle C2D2 diameter, other circle C3 circumference and diameter D3. These all ratios of the different size of the circular object. These ratios we have got same. This is the one special thing we have got in the circle. Special thing. What special? Character.
कि रेशो ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। चाहे वो छोटा सर्कल था, चाहे वो बहुत बड़ा था, चाहे वो और बहुत लार्ज स्केल में बहुत बड़ा था, सभी सर्कल के लिए क्या हमें एक स्पेशल थिंग मिली? वो क्या मिली? रेशो इनका सेम रहा। किनका? सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर। तो सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर का रेशो सेम है, इस रेशो को क्या नाम दे दिया? पाई। बाय द मैथमेटिशियन शकुंतला एंड आर्किमिडीज and many other also, but finalized given by Shakuntala pi। तो देन पाई मीन्स कोई चीज़ कहीं से मिल जाए अचानक और वो स्टैंडर्डाइज्ड हो। तो यहाँ स्टैंडर्डाइज क्या है? सर्कल के अंदर एक हमें कोई चीज़ मिल गई, क्या मिल गया? कि सेम रेशो मिला। किसमें? सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर, सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर, सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर। सभी बड़े सर्कल, छोटे सर्कल में किसी भी टाइप का सर्कल था, बड़ा छोटा, सभी में वो इक्वल आई, रेशो इक्वल। तो स्पेशल थिंग मिल गई कि भाई चाहे बड़ा है चाहे छोटा है वो सेम रेशो मिल रहा है। इसी को हमने पाई कहा है। तो दिस रेशो इज इक्वल टू पाई सी अपॉन डी इज इक्वल टू पाई। तो ये हमारा सर्कल में फॉर्मूला बन गया। क्या क्या फॉर्मूला बन गया? दिस सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। हाउ? बिकॉज डायमीटर इज कॉल्ड 2r। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू डी आर एंड सी इज इक्वल टू डायमीटर इज 2 डायमीटर डी पाई। ठीक है, पाई इंटू डी एंड देन दिस डी इंटू पाई, देन डी इज 2 पाई 2r इंटू पाई, देन वी आर सेइंग सर्कमफ्रेंस 2 पाई r। ओके, एंड पाई वी आर टेकिंग 22/7। So this is in the circular ring we have taken and then got the circumference and then this formula angle I told you। ठीक है, सर्कमफ्रेंस अपॉन रेडियस। तो सर्कमफ्रेंस का पार्ट जितना भी है हाफ पार्ट है तो हाफ सर्कमफ्रेंस हो जाएगी, पाई आर अपॉन आर। ओके बेटा, इफ दिस इज हाफ राउंड यू कैन सी इफ इट इज हाफ राउंड। ओके, इफ इट इज हाफ राउंड मीन्स सर्कमफ्रेंस आर्क, लेंथ ऑफ आर्क हाफ राउंड के लिए कितनी बनेगी? 2 पाई आर का हाफ हो जाएगा सर्कमफ्रेंस कंप्लीट राउंड। हाफ राउंड में कितना बन जाएगा उसका हाफ? पाई आर हाफ राउंड, हाफ रोटेशन। ठीक है, हाफ रोटेशन में, तो हाफ रोटेशन में लेंथ ये बन गई, तो एंगल कितना बन गया? सो एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क एल पाई आर डिवाइड बाई आर कैंसिल इज इक्वल टू पाई रेडियन। दिस इज रेडियन, तो एंगल इज इन रेडियन इन दिस फॉर्मूला। ओके, एंड एंगल फॉर द हाफ राउंड 180 डिग्री, यू नो फुल, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन एंड देन 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। This formula relation in degree and the radian. 1 degree, write down 1 degree is equal to pi upon 180 radian, and 1 radian इक्वल टू 1 रेडियन, ये पाई इधर आ जाएगा, तो 180 अपॉन पाई डिग्री
this is in degree. Okay beta. So 1 radian is equal to 180 upon pi degree and 1 degree is equal to pi upon 180 radian. Write this relation between the relation and the degree. Okay, clear this? Okay, now this relation we have to use, and now question number 1 we can do of the exercise. What is question 1? Conversion is there from degree to radian. Okay, and next question, radian to degree. Clear? How can do? Question number 1 of exercise 3.1. Question number 1. Find the radian measure corresponding to the following degree. Okay, corresponding to the following degree. Okay, question 1. Find the radian measure. Find the angle measure find the angle measure in radian. For the following. ठीक है, फॉलोइंग क्या है? डिग्री गिवन है, तो हाउ मच डिग्री? फाइंड द एंगल मेजर इन रेडियन फॉर द following degree measure. Okay, first part, how much degree? 25 degree. 25 degree. Okay, solution. How can convert degree into radian? And 1 degree we know, because 1 degree is equal to 1 degree is equal to pi upon 180. Okay, radian. This radian. Okay, now 25 degree. So 25 degree. So 25 degree is equal to, multiply by 25. So pi upon 180 into 25 radian. Okay. This formula is important. ठीक है. Now this simplify. So 25 degree in radian will be this. Simplify. 5 5 are 25, 5 3 are 15, 30, 5 6 are 30. ओके, क्लियर? तो कितना बन गया? आप सिंप्लीफाई करें इसको, ये नहीं हो रहा 5 से, तो दिस इज 5 पाई अपॉन 36 रेडियन. ओके, पाई में ही गिवन होगा रेडियन, बिकॉज 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. 360 degree angle I told complete angle, then complete circumference 2 pi r, divide by r, then 2 pi radian. Angle formula, angle is equal to length of arc divided by the radius in radian. ठीक है बेटा?
ठीक है, और कंप्लीट राउंड 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, क्लियर। तो देन दिस रेडियन पाई में 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। नाउ सेकेंड पार्ट, सिमिलरली you can do. What is second part? Second part is minus 40. Minus, angle is in minus also. I want to tell you, angle measure in the negative also. How and why? If rotation of the ray, original ray, about its initial point in anti-clockwise, anti-clock, ऐसे rotation is anti-clock, then positive angle. Okay, if rotation is clockwise, understand, इफ क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे चलती है, क्लॉकवाइज रोटेशन, नेगेटिव एंगल, ओके। और इफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज देन पॉजिटिव, तो एंगल नेगेटिव इफ रे हेयर and rotation is like this and here final ray, then this is negative angle. Okay, negative angle, clockwise is negative, anti clockwise positive. जैसे घड़ी की सुई चलती है क्लॉकवाइज बोलते हैं, तो एंगल नेगेटिव। इफ एंटी क्लॉकवाइज यानी ऑपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक हैंड्स, यानी उसके ऑपोजिट चले तो उसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, वो पॉजिटिव एंगल होता है, फिर वो एंगल पॉजिटिव। तो रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, रोटेशन क्लॉकवाइज तो नेगेटिव एंगल। ओके, तो बी केयरफुल अबाउट द नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंगल। सो दिस for the future you keep in your mind. So second angle is given in negative. What given second angle in the question 1? Second angle is saying in question 1 minus 47 degree 30 minute. Minus 47 degree and 30 minute. Understand, angle is measured in degree and then smaller minute and then smaller unit second. So you know, as in the clock time is there, so because angle is depend on the rotation, on the clock system, on the rotation about one initial point, ray, clock hands, same example for the angle. So it means here angle in degree, complete one rotation 360 degree, but rotation if not complete, then you know 1 upon that part. Okay, then it means here you see that what I want to say कि then 1 hour होते हैं एक कंप्लीट रोटेशन में। 1 hour मीन्स 360 डिग्री, ये समझो। तो इसका मतलब डिग्री से छोटा, फिर आवर से छोटा मिनट, तो इसलिए 60 मिनट। 1 hour में 60 मिनट, इन 1 hour 60 मिनट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डिग्री में लगा दिया, ठीक है। ओके, 60 मिनट, 1 डिग्री 60 मिनट, तो मीन्स हेयर 30
30 minute means half degree. So this will be equal to minus 47 degree and कितना माइनस 47 एंड हाफ, तो माइनस 47 एंड हाफ डिग्री, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है बेटा, 30 मिनट मीन्स हाफ डिग्री। तो दिस सिंप्लीफाई दिस, इट इज माइनस फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इट इज मिक्स फ्रैक्शन। तो 2 7 जा 14, 14 1 15, कैरी 1, 2 4 जा 8, 8 1 9, माइनस 95/2, ओके डिग्री। क्लियर? क्लियर भाई? 2 7 जा 14, 1 15, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके देख लो, मिक्स बनाओ। ओके, 2 4 जा 8, 15, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1, तो 47 होल 1/2। दिस नाउ दिस कन्वर्ट डिग्री कन्वर्ट इनटू रेडियन। वी नो बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, सो माइनस 95/2 डिग्री, सो दिस डिग्री विल बी इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू माइनस, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई 95/2। ओके, सिंप्लीफाई, 5 1 जा 5, 45, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 30, 5 6 जा 30। ओके, then 19 not divisible by that, so it will be minus 19 pi upon 36 into 2, 72 this radian. Okay, simple conversion with the help of this standard formula. Direct we have to take 1 degree equal to pi upon 180 radian. Okay, like this we can do other part of the question 1 similarly. ठीक है, तो you can do other parts also. We have to understand the thing, this formula, and do that. Okay, be careful, take interest, watch, like, share and subscribe the channel to get the next notification. ओके, और सभी को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कॉन्टैक्ट जितने भी हैं सबको वीडियो शेयर करें, फॉरवर्ड करें, जिससे कि वो देखें, उनको बेनिफिट हो। उनको गाइड करें कि सब्सक्राइब द चैनल एंड सेंड द योर फीडबैक्स इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।